Hello everybody, I'm back, Dr. K.K. Agarwal, President, Heart Care Foundation of India, and you are watching Med Talks with Dr. K.K. Let's have the topic of the day. Today is World Tuberculosis Day, and we are concentrating ourselves on TB diagnosis, new guidelines from RNTCP to National TB Elimination Program, new definitions, and NTB program by the government with an idea to reduce the menace of tuberculosis in our country. Before I introduce you to tuberculosis, our special guest जो हमारे को टीबी डायग्नोसिस में नई दिशा दिखाने वाली हैं, दिशा भाटिया, consultant clinical microbiologist and safety officer at Core Diagnostics in Gurgaon. Remember, दिशा जी दिशा दिखाएंगी किस चीज के बारे में? टीबी डायग्नोसिस के कोर इश्यूज में. She is an aerobic and anaerobic she is an expertise in anaerobic and aerobic bacteriology, mycology, mycobacteriology, serology, PCR, and immunology. And she has to her credit many national and international publications. So Disha ji, namaste aaj ke din mein, and congratulations for our World TB Day, and all the doctors in the country and also the public would like to know what's new in TB diagnosis and what is Core Diagnostics doing in newer TB diagnosis in terms of molecular testing. Today, everybody, 100% people understand what is molecular testing, what is cartridge-based nuclear amplification test, what is TrueNet, what is ultra testings are available, what is culture, what is LPA studies, line probe assays. General public has been talking about it because of the COVID sensitivity, everybody has been. So it will be easier for people to correlate COVID-19 with tuberculosis. Over to Dishaji. Good evening, sir. Today is World TB Day, and I have a short presentation to give an overview of the current situation, global situation, and what all modalities we have available to diagnose TB currently, and what are their pros and cons of various modalities. So, can we have the presentation, please? Right. Rapid diagnosis is very important in tackling the TB menace. We have to find all the cases, find more cases that are going undiagnosed, and after that we have to provide them all with treatment, and we also have to give preventive treatment to people who are at risk. So next slide, please. Yes, the clock is ticking. This is the theme for today's World TB Day, this year's World TB Day, which means that all the global leaders had made certain commitments towards ending TB by 2022, which is next year. And we are lagging behind on those goals, on our progress towards those goals. So the clock is ticking, and we have to strengthen our efforts towards ending TB. So just a quick overview of the global situation. In 2019, 10 million people were ill with TB, and there were 1.4 million TB deaths. Drug-resistant TB, which can be multi-drug-resistant TB or rifampicin-resistant TB or pre-XDR or XDR TB, that is also a public health crisis with around 0.5 million people diagnosed with drug-resistant TB in 2019. And regarding this drug-resistant TB, out of the new TB cases, around 3% were drug-resistant, and out of those cases who had previously received TB treatment, 18% of those were diagnosed later with drug-resistant TB. And 2 out of 3 people with drug-resistant TB are still not getting the treatment they need, because drug-resistant TB has a different specialized treatment, different from sensitive TB. And India is contributing a lot to this global burden
26% of the total global TB cases come from India, and 27% of the global drug-resistant TB cases are from India. So this is a major problem for us, and we have to focus on this. Next slide, please. Okay, so we need to move towards microbiological confirmation of as many cases of TB as we can. There is also clinically diagnosed TB, but it is essential to correctly diagnose TB bacteriologically and treat it accordingly. So currently, according to the RNTCP, there are three major modalities which can be used to diagnose TB. First is the oldest technique, which is sputum smear microscopy, which is basically you take a sputum sample and you prepare a slide, stain it, and it is observed under the microscope for the presence of bacilli, the TB bacilli. Second is culture. Culture can be either solid culture media or the automated liquid culture. This is the gold standard for TB diagnosis. This is the technique against which we compare all other modalities of TB diagnosis. And the third is a rapid diagnostic test, which includes LPA and other molecular tests, such as the Xpert platform, which has different cartridges, the latest one being Xpert MTB RIF Ultra. Next slide, please. So a comparison of these modalities. First is the sputum smear. So sputum smear is the oldest technique available, but it has a few disadvantages, which is why it is not the optimal technique that we have. So first is it needs careful manual scanning of the slides. A trained operator needs to scan these slides under the microscope looking for these TB bacilli. And time has to be spent on this. If you're in a hurry, you may miss the bacilli. This also has a low sensitivity. That is, the lower limit of detection is 10,000 CFU of the bacilli per ml of the sputum. So it means it's hard to detect the TB bacilli by this technique unless there is at least 10,000 CFU per ml in your sample. It has low specificity, which means it cannot distinguish between the TB bacillus and non-tuberculous mycobacteria. There are certain mycobacteria which do not cause TB, which can cause other diseases, or which can exist as environmental contaminants. So this slide method cannot distinguish between these two categories. And since it has low sensitivity, low specificity, a negative result does not rule out TB. Next is culture. So culture, as I mentioned, is the gold standard, and it can help in detection of both Mycobacterium tuberculosis and NTM bacteria. Also, this is can be used to perform drug susceptibility testing. So we can check what all drugs the bacillus is sensitive to or resistant to for a particular patient by using the culture technique. But it has its own drawbacks. The main one being it is time consuming. It can take up to 6 to 8 weeks to get the result of a culture test. It is labor intensive. Highly trained personnel are needed to perform this testing, and the lab infrastructure biosafety requirements are also quite high, making this difficult to do and time consuming. Now moving on to the latest, the molecular techniques. So in that, we are discussing the Xpert Ultra. This is done on the Xpert machine. This is a cartridge-based nucleic acid amplification test, which basically means that the technology being used is a PCR, but the entire reaction, all the steps of the PCR are happening inside one single cartridge. So all the setup that is needed for other PCRs, that entire setup is not needed. It is done in one single cartridge. It has a couple of advantages. It is a rapid test. So starting from the sample to the final report, everything can be completed in around 3 hours. The hands-on time is about half an hour, and then the system takes 2 hours to generate the result. So it is quite rapid. It is easy to perform, and it is much more sensitive than AFB smear. So this has a lower limit of detection of 12 CFU per ml. So contrasted with the AFB smear, which had 10,000 CFU per ml as its lower limit of detection. So this is highly sensitive. It gives a semi-quantitative result,
It can tell you approximately about the load of the TB bacilli in the sample, and its accuracy and negative predictive value are better than AFB smear, which means that a negative expert result can be used to rule out TB in a case. Also, one of its great advantages is that it detects MTB and resistance to rifampicin simultaneously. One single test can detect TB and rifampicin resistance in that same time period. So this decreases the time to diagnosis and it prevents pre-treatment loss to follow-up. And it can also be used to give a clue to an NTM infection if we use it along with an AFB smear. So if we have a positive AFB smear and a negative expert result, this would imply that the patient might have an NTM infection. Next slide, please. So to sum up, basically the Xpert Ultra gives us a best of both worlds. It gives us high sensitivity and specificity nearing that of culture while still being rapid, and the interpretation is not operator dependent. The machine gives you a readout which says MTB detected or not detected, with how much load, and rifampicin resistance detected or not detected. So it gives same day diagnosis in a single test, and it can be helpful in ruling out TB with ease. Next slide, please. These are the WHO recommendations regarding Xpert Ultra. So they are recommending it as the initial test to diagnose pulmonary TB and to detect rifampicin resistance. This should be used as the first test, not the smear. Xpert should be used to diagnose as well as to detect the resistance status. Then it is also recommended to improve diagnosis of pediatric TB using various samples such as sputum, stool, nasopharyngeal swab, and gastric specimens. And it is also recommended to improve the diagnosis in extrapulmonary TB cases. Next slide, please. Now moving on to TB and COVID-19. So in 2020, COVID-19 has emerged as the single greatest infectious cause of global mortality. Before 2020, this dubious distinction was awarded to TB. TB was the greatest cause of global mortality, even more than HIV. So while we are focusing all our attention and all our efforts on COVID, we must make sure not to forget TB because it is still a big problem, and for the entire world and especially for India. So regarding TB and COVID-19, now both these diseases share many overlapping clinical features such as fever and cough, and many risk factors also. So the socially vulnerable populations and people with comorbidities, they are more susceptible to both of these infections. And TB can also present with the acute community acquired pneumonia. So we need to keep TB in mind as well. Next slide, please. So studies have been conducted regarding co-infection with TB and COVID-19. So a same patient with both the infections. Multiple presentations were seen. In some patients, COVID was detected first and then TB. In the others, TB was detected first, then COVID, and in others, both were detected on the same day. Now, it is difficult to establish what causal or temporal association these two had with each other. More studies are needed for that. But what we do know and what we do have an idea about is that the effect that COVID has on the immune system, that may reactivate latent TB, and COVID may render patients more susceptible to TB infection. Next slide, please. Then the other side of the equation, the impact of TB on COVID-19. So TB, as we know, it damages the lungs and it has an effect on the local immunity, which makes the person more susceptible to respiratory pathogens like COVID-19. So individuals with a current active TB or a past history of TB are at an increased risk of COVID-19 infection. Also, it leads to a worsening of COVID symptoms. So co-infection with TB and COVID-19 leads to a poorer prognosis. And socially vulnerable populations like malnourished individuals or people staying in overcrowded areas or homeless individuals or people with comorbidities like diabetes, they are all at increased risk and have a worse prognosis. Next slide, please.
Regarding the radiological findings, so the study that was conducted in 8 countries, they studied 49 co-infection cases. So it was almost half and half. They found that 21 patients had typical COVID pattern on their CT, and 23 patients had other different patterns or essentially TB-related lesions. So the radiological findings were not conclusively pointing to either TB or COVID-19 in these cases. Next slide, please. So, to sum up, basically TB is endemic in India. It shares risk factors and clinical features with COVID, and the possibility of co-infection exists with worse prognosis. So, we have to consider both tests at consultation. What has also happened is that some patients have approached the doctor because of COVID. They, came to the healthcare facility because of COVID, and that enabled detection of a pre-existing long-standing TB infection. So that has also happened. It has brought to light pre-existing TB infection. So now what we need to keep in mind is that when a patient presents to us with symptoms of an acute respiratory infection or especially pneumonia-like symptoms, then we have to conduct both tests, COVID-19 RT-PCR and an Xpert for TB. Next slide, please. So this is the take-home message. This is from WHO, which says, find, treat all. We have to increase our TB diagnosis, and we have to ensure that TB programs are not disrupted during COVID-19 control efforts. Rather, whatever strengthening and whatever developments to our systems we've done for COVID-19, we should use those to enhance TB diagnosis and control. Thank you. That's it from my side. Thank you, Disha. Tuberculosis diagnosis. As this program is also live on social media, so I will do some rapid fire questions with you. Number 1. And I will be both English and Hindi. In some I will use the Hindi so that we get greater audience. If I am suspecting tuberculosis and I have a sputum sample, what do I write? When I say, should I write Xpert Ultra, or what you call them as RIF Ultra, or Xpert? Is there a cost difference? Yes, so Xpert has 2 cartridges. One is the Xpert MTB RIF and the other is Xpert MTB RIF Ultra. The Ultra is more sensitive. It can detect smaller amounts of the TB bacillus if it is there in the sample. So this is currently the best available test out of the 2 सरकार Xpert कर रही है, आप लोग Xpert Ultra कर रहे हो. So do you feel in private sector everybody should write down the word Ultra? Yes, definitely. It is better. So if it is available, then definitely one should go for it. Okay. And Ultra can detect 16 CFU, and your Xpert picks up 131 CFU, and you said sputum slide needs 10,000 CFU. So therefore, अगर एक Xpert Ultra और RIF Ultra नेगेटिव है, तो क्या मुझे दोबारा करने की जरूरत है, और मेरा इतना सेंसिटिव है कि मेरा फॉल्स नेगेटिव नहीं होगा? हाँ, फॉल्स नेगेटिव के चांसेस इसमें बहुत कम है. तो सैंपल अगर अच्छे से लिया हुआ है, विच मीन्स कि उसमें प्यूरुलेंट पोर्शन होना चाहिए, सलाइवा कलेक्ट नहीं होना चाहिए, सैंपल कलेक्शन हैज टू बी प्रॉपर. इफ इट इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, देन कोई जरूरत नहीं है उसके रिजल्ट को डाउट करने की. So one thing is that if you are suspecting tuberculosis, send for Ultra, and Ultra नाम आप सब लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए. And उसके बाद में if the test is negative, practically pulmonary tuberculosis can be ruled out. अब extra pulmonary tuberculosis में मैं क्या टेस्ट कर सकता हूँ? अल्ट्रा भेजने के लिए क्या स्पेसिमेन भेजूँ? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिस भी पार्ट का सस्पेक्टेड है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली रेलेवेंट टिश्यू बायोप्सी वो वाला सैंपल होगा. उसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि ब्लड वाले जो सैंपल्स हैं वो एक्सपर्ट में प्रोसेस नहीं हो सकते, और यूरिन वाले सैंपल्स, सो दोज कैन नॉट बी प्रोसेस्ड विद द एक्सपर्ट अल्ट्रा. अदर सैंपल्स अकॉर्डिंग टू द साइट कैन बी प्रोसेस्ड.
तो यूरिन के लिए क्या करेंगे? जैसे HIV पेशेंट में हम यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो उसके लिए क्या सैंपल भेजेंगे, क्या टेस्ट लिखेंगे? TB का PCR पे अवेलेबल है, we are doing that also, so PCR can be done with that. FNAC के लिए अगर मेरे को टिश्यू है, लिम्फ नोड है, और अगर किसी का लिम्फ नोड से पस निकल रहा है, तो उसको मैं डायरेक्ट भेज सकता हूँ जीन एक्सपर्ट RIF अल्ट्रा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो आज की डेट में क्या लगता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ rifampicin resistance you are getting? Rifampicin resistance that we are getting means कि आपने अल्ट्रा टेस्ट किया, कितने प्रतिशत लोगों में rifampicin रेजिस्टेंस आ रहा है आपकी लैब में? मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा। ओके, हमारी लैब में इट इज अराउंड 10%। 10% एक तरीके से MDR आ रहा है। यस। ओके, बीइंग ए रेफरल लैब, बीइंग ए रेफरल, उसमें से प्राइमरी केसेस कौन से हैं जिसमें एक तो होगा जो पहले किसी को ट्रीटमेंट चल रहा होगा, प्राइमरी केसेस फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड नॉट ऑन ट्रीटमेंट, उनमें कितने % को पॉजिटिव आ रहा है? This I will have to check, sir. I'll have to check the data. अगर किसी को rifampicin रेजिस्टेंस है तो उसके बाद क्या करोगे? INH के लिए अलग से करोगे या सीधा? So rifampicin resistance in most cases is part of MDR TB. उनमें INH resistance भी होता है most of the cases, but facilities are available now for first line LPA. तो अगर feasible है, ये मतलब trying to scale up, हमारी गवर्नमेंट का ये गोल है कि ज़्यादा अवेलेबल करें ऐसे, तो अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो लाइन प्रोब ऐसे फॉर फर्स्ट लाइन एजेंट्स करना चाहिए टू चेक फॉर INH रेजिस्टेंस स्टेटस। अभी आपने स्पूटम का सैंपल लिया और आपने उसको जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा RIF अल्ट्रा लगा दिया, तो एक मशीन में एक बारी में कितने कार्ट्रिज लग सकते हैं? एक मशीन में एक बारी में 4 सैंपल टेस्ट हो जाते हैं, तो उस 1.5 आवर्स में हमारे पास 4 सैंपल्स का रिजल्ट आ जाता है। नहीं, तो इसका मतलब है एक मशीन में मैक्सिमम कितने केसेस कर सकते हैं हम एक दिन में? एक दिन में, हाँ, तो मतलब 1.5 आवर्स लगता है फॉर 4 सैंपल्स, सो अकॉर्डिंगली अ लॉट ऑफ सैंपल्स कैन बी प्रोसेस्ड एंड आवर लैब रन्स 24/7, सो वी कैन प्रोसेस। उसके साथ में, और लोगों को रिपोर्ट सेम डे देते हो? हाउ डू यू इन्फॉर्म द रिपोर्ट, बाय SMS और बाय ईमेल? अगर मेरे को होता है, और तो अभी मेरे को अगर आपको पता लगता है कि इसको rifampicin रेजिस्टेंस है, तो क्या आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हो कि पेशेंट को कलेक्ट करनी पड़ती है रिपोर्ट? नहीं सर, जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाता है हम इमीडिएटली पेशेंट को ईमेल और SMS से इन्फॉर्म कर देते हैं। Because I'm concerned basically about rifampicin resistance, because that becomes an important issue. उसके साथ में कल्चर भी करते हैं आप लोग? हम कल्चर नहीं कर रहे हैं सर। हम कल्चर नहीं कर रहे हैं। So आज की डेट में what Disha ji is giving us the direction is that under the new NTB program, anybody who is suspecting to have tuberculosis, remember people who are watching this program, वो जमाना चला गया जब हम स्पूटम टेस्ट करते थे। Now we have labs who are doing special tests, and that special test today in the private sector is far more sensitive than in the government sector. Far more sensitive. गवर्नमेंट अभी भी सिंपल जीन एक्सपर्ट टेस्ट कर रही है, जिसमें 131 CFU लगेंगे, लेकिन अगर आपका अल्ट्रा टेस्ट नेगेटिव है, प्रैक्टिकली यू कैन रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस इज क्योरेबल, कंट्रोलेबल। प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराओ या गवर्नमेंट सेक्टर में इलाज कराओ। WHO ने तो क्लियर कट बोल दिया है कि सबका जीन एक्सपर्ट टेस्ट होना है, होना है, होना है। करीबन 5 लाख लोग केसेस ऐसे मिलेंगे जिनको जीन एक्सपर्ट टेस्ट में रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस आएगा, जिनको स्पेशल टेस्टिंग के लिए भी फ्री फैसिलिटी सरकार के यहाँ अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको क्विक डायग्नोसिस चाहिए, सरकार में आपको डाउट होता है सैटरडे काम करेंगे कि संडे काम नहीं करेंगे, दिशा जी तो कहती हैं कि हम तो 24/7 है, यानी कि
रात को भी सैंपल दोगे तो हम कलेक्ट कर लेंगे उसको। सो आज का मैसेज एक्सट्रीमली क्लियर है, and that is whosoever is watching this program, spread this message to the people. A terminology called ultra test कोविड में नहीं आए थे, कोविड में भी हम सीबी नेट और ट्रू नेट कर रहे हैं, वहां पर भी हम लोग RT-PCR कर रहे हैं, लेकिन जो टर्म अल्ट्रा आई है वो आपने, अल्ट्रा इज समथिंग लाइक अल्ट्रा सेंसिटिव TSH. It is like high sensitivity C-reactive protein. It is like high sensitivity microalbumin in the urine. So the word ultra means कम से कम बेसिलाई को आप पकड़ सको। 16 बेसिलाई कहते हैं कि किसी जमाने में कुछ डॉक्टर हुआ करते थे कि अगर आपकी टेस्टिस में एक भी स्पर्म है या आपकी वाइफ के अंदर में एक भी ओवरी है तो हम प्रेगनेंसी क्रिएट कर देंगे। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस में आया है कि अगर आपके स्पूटम सैंपल में 16 भी बेसिलाई CFU है तो ये टेक्नोलॉजी उसको पकड़ लेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सैंपल कलेक्शन एंड सैंपल कलेक्शन। तो क्या आप होम सर्विस देते हो सैंपल कलेक्शन के लिए या उनको गाइड करते हो हाउ टू कलेक्ट द सैंपल? दिशा जी। हाँ जी सर, हम होम कलेक्शन ऑफर करते हैं, हम वही इनकरेज भी करते हैं ताकि सेंटर पे आके किसी को एक्सपोजर ना हो, बाकी लोगों का भी एक्सपोजर ना हो, तो सीधा होम कलेक्शन होती है। वहाँ पे हमारा जो आर लैब पर्सनल दे विल गाइड द पेशेंट कि सैंपल कैसे कलेक्ट करना है और फिर वो लैब लेके आते हैं। कुछ एक सवाल ले लेते हैं। एक सुनीता मेहता जी पूछ रही हैं कि एब्डोमिनल टीबी के लिए क्या करें और लिम्फ नोड की टीबी के लिए क्या करें और बच्चों के लिए क्या करें। और दूसरा सवाल है, एक ने पूछा है स्पाइन टीबी का और एक ने पूछा है यूट्रस की टीबी का। ये 5 चीज़ों के अलग अलग जवाब है, आप बताएंगे। सबसे पहले टीबी ऑफ यूट्रस, तो क्या हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके उसका जीन एक्सपर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, यस सर। इसका एंडोमेट्रियल बायोप्सी होता है और मेंस्ट्रुअल ब्लड, ये सैंपल्स कॉमनली प्रोसेस किए जाते हैं, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी का हम एक्सपर्ट कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड का एडवाइस नहीं है, उसके लिए PCR कर सकते हैं। वी आल्सो ऑफर PCR फॉर टीबी। एंड टीबी स्पाइन के लिए तो कोई या तो बायोप्सी होगी, अदरवाइज क्या कर सकते हैं? सर उसका रेडियोलॉजिक एब्डोमिनल टीबी के लिए क्या हम नीडल डाल के, अगर फ्लूइड है तो निकाल के उसका जीन एक्सपर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन बच्चों में कोई स्पेसिफिक आपके लिए, कि आपने बोला था स्टूल कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो स्टूल के लिए कैसे करते हैं? बच्चों के लिए गैस्ट्रिक एस्पिरेट इज अ गुड सैंपल, क्योंकि वो स्पूटम नहीं प्रोड्यूस कर पाते, तो गैस्ट्रिक एस्पिरेट यूज हो सकता है, स्टूल भी यूज हो सकता है, और ब्रोंकोएल्वुलर लवाज भी किया जाता है। ये सब यूज हो सकते हैं सैंपल्स। केदार जोशी जी कर रहे हैं कि ये देखने में आया है कि स्पूटम सैंपल नेगेटिव होने पर भी टीबी का इलाज कर दिया जाता है। क्लिनिकल सस्पिशन पे आप कर सकते हैं, उसको थेरापेटिक ट्रायल बोलते हैं। सर पंजाब में कोविड यूके स्ट्रेन आ गया है, ये लॉन्ग टर्म कब तक रहेगा? यूके स्ट्रेन के केसेस पूरे भारत में सारे स्ट्रेन दिख रहे हैं, आज तो नया स्ट्रेन आ गया है और वो नया स्ट्रेन के अंदर में 2 अलग अलग RBM में म्यूटेशंस हैं और 484 एंड 452 म्यूटेशंस हैं। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और उस म्यूटेशन के ऊपर में डेफिनेटली भारत के अंदर में आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर कल तक 50,000 केसेस पर डे क्रॉस हो जाए। ये है ये काम्या शारदा जी ने बोला है, मैंने आपको पिक्चर भेजी है, मैं देखता हूँ अभी उसके साथ में। ये है मनीष रंजन, आफ्टर फुल कोर्स ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट आस्क वेदर वी आर क्योर्ड और नॉट, हाउ टू कंफर्म। वो कहते हैं कि कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, क्या जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा टेस्ट मरे हुए बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करेगा जिंदा बैक्टीरिया को? दिशा जी। और क्या यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन होगा कोविड वाला कि भाई मरा हुआ वायरस है कि जिंदा वायरस है? बिल्कुल सर, PCR टेक्निक में वायबल और नॉन वायबल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो अगर मरा हुआ बैसिलाई होगा वो भी डिटेक्ट होगा। ये इसका है
फीचर है पीसीआर का, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए स्मीयर भी काम नहीं करता है, वो सिर्फ कल्चर बता सकता है हमें कि वायबल है या नहीं। तो शारदा जी, आपने जो पिक्चर भेजी है मुझे दोबारा भेजिए, अभी मैं अभी इसको ले लेता हूँ, राइट अवे मेरे को भेजिए। ये है कुणाल कोटीवाल जी। आई गोट इन्फेक्टेड ऑन नवंबर 13, वैक्सीन फर्स्ट डोज, री इन्फेक्शन ऑन 16 मार्च, शुड आई टेक द सेकेंड डोज। आपको तो 2 मिल चुकी, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। ये कहते हैं मेरा 13 नवंबर को हुआ था, 15 फरवरी को मेरे को फर्स्ट डोज मिली और 16 मार्च को मेरे को री इन्फेक्शन हो गया। अब मैं क्या करूँ, बताइए, आप एडवाइस करिए इनको। सर मैं थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन पैची हो गया था, आप रिपीट करेंगे? Which vaccine is found successful for MR tuberculosis, multi-resistant tuberculosis? Doesn't matter, कुछ जो मर्जी लीजिए। Non-pulmonary TB cannot be caused by a droplet infection. What kills more Indians per day, TB or COVID-19? TB. क्या उल्टा टेस्ट की संविधान सभी जगह पर है? क्या अल्ट्रा टेस्ट सब जगह पर होता है? भाई कोर में तो होता है। आज हमने सवेरे जाना था, एक मैन पैथ काइंड का भी हमने सेमिनार अटेंड किया था, उसमें भी होता है, कोर में तो होता है। तो कोर को तो याद रखिए। टीबी का कोर टेस्ट अल्ट्रा कहाँ करा है? कोर में। ये तो याद करने का तरीका है आपके पास में। सर टीबी फिर से दोबारा हो गया है 2014 में, क्या करूं? बोलिए, बताइए। सर री इन्फेक्शन के जो केसेस होते हैं, मतलब प्रीवियसली ट्रीटेड टीबी में ड्रग रेजिस्टेंस का काफी हाई चांस होता है, तो उसमें डेफिनेटली सीधा जीन एक्सपर्ट कराना चाहिए टू चेक कि वो रेजिस्टेंट है या नहीं। उसके बाद एमडीआर टीबी का ट्रीटमेंट चलेगा, और फैसिलिटीज आर देयर नाउ फॉर लाइन प्रोब एसे एंड कल्चर एंड डीएसटी शुड आल्सो बी डन, ताकि इंडिविजुअलाइज्ड टीबी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो तो वो कर सकते हैं उस पेशेंट का। मैंने भारत सरकार से बात करी थी, मैंने कहा था कि हर उस केस में निमोनिया में जो रिजॉल्व नहीं हो रहा कोविड-19 के बाद में, उसमें वो जीन एक्सपर्ट टेस्ट करें, उनकी रिकमेंडेशन भी है। तो आप लोग भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा था 13% लोगों में टीबी निकला ऐसी सिचुएशन में। अगर आपका कोई पेशेंट जिसको निमोनिया है और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो चेक करिए, जीन एक्सपर्ट टेस्ट कराइए, अल्ट्रा। सो आज का सेमिनार हम यही समाप्त करते हैं कि दिशा जी ने जो दिशा दिखाई है, वो नाम सुनाया है, अल्ट्रा 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 अल्ट्रा। अल्ट्रा सेंसिटिव TSH, अल्ट्रा सेंसिटिव CRP, अल्ट्रा सेंसिटिव हमारे पास में ट्रोपोनिन आई होता है। हर जगह पे एक अल्ट्रा आ रहा है कि अगर आपको अंदर से घुस के एक एक बैक्टीरिया को पकड़ना है। हमारे यहाँ पे एक सर्जन हुआ करते थे, लोग कहते थे कि वो एक एक RBC को पकड़ के उसको सील करते हैं, यानी कि सर्जरी में इतना टाइम लगाते हैं। उस वगैरह अल्ट्रा की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं टीबी के ऊपर में। अगर आपने कोई टेस्ट कराना है स्पुटम का तो अल्ट्रा वाला कराइए, प्राइवेट सेक्टर में होता है, उसकी कॉस्ट रूटीन टेस्ट के साथ में कोई डिफरेंट नहीं है। धीरे धीरे जिन लैब में जीन एक्सपर्ट होता था, अब सब लोगों ने उसको अल्ट्रा से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाते जाते कुछ बताना चाहती हैं, कॉस्ट कितनी है और आप कैसे मिलेंगे? आपके यहाँ सैंपल कराना हो तो कैसे कराएं? कॉस्ट यहाँ पे एक्सपर्ट अल्ट्रा की 2700 है, एंड दोनों टेस्ट का भी पैकेज है, कोविड पीसीआर एंड एमटीबी एक्सपर्ट अल्ट्रा, ये 3500 के लिए अवेलेबल है। होम कलेक्शन के लिए बुक कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, उस पर कॉल करके होम कलेक्शन बुक कर सकते हैं। तो आके आपके घर से सैंपल लेके चला जाएगा हमारे लैब से, एंड उसके बाद रिपोर्ट जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाएगा, रिपोर्ट आपको ईमेल या SMS दोनों पे आ जाएगी। That's all for today. Let me thank Bishaji to be here, and we will be back tomorrow at 7 p.m. with another show. Keep watching Med Talks with Dr. KK.